So the topic was forces affecting the Earth's movement. Endogenetic force. Another is exogenetic force. In endogenetic forces, diastrophism, another is sudden changes, sudden movement. So yesterday we have completed this diastrophism. In diastrophism, there are two types of process of forces. One is aperogenic, another is orogenic. In aperogenic, again, there are two types of movement, upward and downward. And in orogenic, tensional and compressional. Okay. Now come to sudden movement. These diastrophism are very slow in nature. Continent formation, mountain building. It takes lots of years, thousands of years. But these sudden movements are very sudden in nature. It brings abrupt changes in the crust. If we talk about various sudden movement, then there are two types. First one is earthquake. And another is volcanoes. Okay, so today we will cover this topic. So sudden movement. Next heading is sudden movement. लिखो these movements are very sudden, so it brings abrupt changes in the crust. For example, earthquake and volcanoes. First heading is earthquake. When we started the geomorphology in the very beginning, we have completed earthquake waves. This is earthquake, means those waves are responsible for the earthquake. है ना? So what is earthquake? It's shaking or trembling of earth surface. और इसमें मैंने आपको दिखा एक डायग्राम बनाया था. This is the fault. ये क्या है? This is fault line. This is the point from where energy is releasing. That is called focus or hypocenter. Focus or hypocenter.
and this is epicenter. So draw this diagram. So first point. Earthquake means trembling of the earth surface, trembling of the earth surface due to sudden release of energy, from within the earth's interior, from within the earth interior along a fault line, next point, the place or point in the crust where the movement starts is called focus or hypocenter. क्रस्ट मींस लिथोस्फीयर प्लेट. लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? लिथोस्फीयर मींस क्रस्ट plus the uppermost layer of the mantle. Okay, so next line, the place on the surface, above the focus is called epicenter, Next point, the intensity of earthquake is highest at the epicenter, and decreases with distance from the epicenter due to tension. A crack is developed here. ऐसा ही कुछ हमारे जैसलमेर में भी डेवलप हुआ है. So this is because of tensional force. This is because of compressional force. This is a fold. ठीक है, fold हो रहा है. These are anticline and syncline. It means this point is called anticline, and this is the valley portion. This is syncline. देखो, this is syncline, this is anticline. अगर शेप कुछ ऐसा है, एक slopey type, then it is called monocline. Various types of folds. When this side and this side, these are equal, A is equal to B, then it is symmetrical. When A is not equal to B, then it is asymmetrical. When A is equal to B and A is also parallel to B, then it is isoclinal. थोड़ा सा और ये बेंड हो जाएगा, then it will be overturned fold. ब्रेक हो गया, एक साइड में गिर गया, then it is called recombinant.
and if symmetrical fold is not in वेवी फॉर्म, यहां पे क्या है, एक वेव फॉर्म में, ये कॉनिकल फॉर्म में आ जाए, दिस सिमेट्रिकल फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड शेवरॉन. ओके, तो दीज आर टाइप्स ऑफ फोल्ड्स. अब देखो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा. दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स बिकॉज दीज आर वेरियस लेयर्स. Because of tension, some portion will move down, some portion will be move upward. Then host graben, मैंने बताया था आपको. Now seismic activity, ये diagram अच्छा. So this is the fault line and this is the focus point from where energy is releasing in all direction. The point just above the focus is called epicenter. Epicenter पे सबसे ज्यादा earthquake का डिजास्टर देखने को मिलेगा और उससे जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना वहां पर कम डैमेज होने वाला है. Because the soil, it will absorb the energy which is released from the epicenter. ठीक है. Now हाँ बताओ. Fault line, in this diagram, these are fault line. जहां से ये ब्रेक हो गया है, ठीक है, दिस इज फॉल्ट लाइन, दिस इज फॉल्ट लाइन, दिस इज फॉल्ट लाइन. तो अगर इनका मूवमेंट होगा, अब कितनी प्लेट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, दे आर 5 यूनिट्स. लेकिन इनके बीच में जो प्लेन है जहां से उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, एट दैट पॉइंट, ये कहां, वो पॉइंट कहां होगा, एट दिस प्लेन. ठीक है, तो इस प्लेन के लिए अगर हम इधर साइड से देख रहे हैं, देन इट विल बी अ लाइन. सो दिस इज कॉल्ड फॉल्ट लाइन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉल्ट प्लेन. क्लियर? हाँ, definitely, because of the movement, at some point energy will be released and that energy will produce earthquake. Yes, earthquake आता है तो रात में भी यहाँ पे, हाँ, host and graben. Yes, सिंपल है. अगर मान लो कंप्रेशनल फोर्स लगा, बिकॉज कंप्रेशन फोर्स, सडन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस प्लेटफॉर्म विल बी अपलिफ्टेड. कहीं एंटीक्लाइन बन रहा है, डेफिनेटली अनदर पार्ट पे सिंक्लाइन भी बनेगा. Now there are two scales to measure earthquake, Richter scale and Mercalli scale. ठीक है, so first heading is Richter scale. या ऐसे डालो, मेजरमेंट ऑफ earthquake. One is Richter scale, another is Mercalli scale. Richter scale and Mercalli scale. Richter scale measure the magnitude of released energy. Okay, कितना एनर्जी यहां से रिलीज हुआ, इट विल बी मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल, while Mercalli scale measures, it measures
the intensity of earthquake. Okay, it is measuring the intensity of earthquake, while Richter scale is measuring the magnitude of energy released. दोनों में difference है. When we are talking about intensity of earthquake, कितना severe earthquake है, ये मर्केली स्केल मेजर करेगा. हमेशा याद रखना, मर्केली मींस मर, कितने लोग मरे, इट इज मेजर्ड बाय मर्केली. ओके, सो इंटेंसिटी यहां से पता चल रही है, एंड रिलीज एनर्जी मैग्नीट्यूड, इट इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल. इसका जो मैग्नीट्यूड रेंज है रिक्टर स्केल का, इट रेंजेस बिटवीन 0 to 9. मींस इसका जो स्केल है उसपे 0 to 9 की मेजरिंग होती है, while मर्केली स्केल ranges 1 to 12. एक स्केल है जिसपे फॉर एग्जांपल छोटा वाला स्केल आता है ना, 6 इंच, सो 1 2 3 4 5, ऐसे ही 0 to 9, while this mercury scale ranges between 1 to 12, minimum 1, maximum 12. So this is about the measurement of scale. Now distribution of world, distribution of earthquake in world. Which of them becomes, like if there is an earthquake and something like 7.1 or 6, it is the magnitude of it. It is the magnitude. Next heading, distribution of earthquake in the world. Now tell me, in which part of the world maximum earthquakes are occurring even right now? Ring of fire. Ring of fire. Yes, it is ring of fire. In this zone 70% earthquakes of the world वो इस जोन में ही हो रहा है, in this ring of fire, and remaining 30% में से 20% is happening here. मैंने आपको एक जो प्लेट टेक्टोनिक में मैप बनाया था उसमें आप देखना, फ्रॉम आल्प्स माउंटेन टू हिमालयन mountains, then Indonesia, there is a convergent boundary. Remaining 20% earthquakes are occurring there, and rest 10% are in the mid-oceanic ridges. ठीक है, so this is about the distribution. लिखो इसमें 70% of earthquakes, 70% of earthquakes occur in the circum-Pacific belt another 20% of earthquakes take place in Mediterranean, Mediterranean, Mediterranean dash Himalaya belt, including Asia Minor, comma Himalayas, and parts of northwest China. Next point.
remaining 10% occur in the remaining 10% earthquakes occur in the interior of plates and on spreading ridge centers. Spreading ridge centers. Next heading is causes of earthquakes. There are more states in Greenland and European. Remaining 10% में बाकी सब जगह आ गए. Causes of earthquake. First is natural causes. Second is man-made causes. Remaining, मैंने अब क्या बताया, 70% are occurring in ring of fire, 20% are occurring in Mediterranean Himalayan belt. It means Himalaya. ठीक है, इसीलिए आप क्या देखोगे, भुज में अर्थक्वेक आता है, और जितना हिमालयन रीजन है, उत्तराखंड, ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, नेपाल में भी आया था इन 2016. दिस इज हिमालयन बेल्ट. ये क्या है, 20% आ रहा है. साउथ इंडिया, जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे तो देखेंगे पूरे इंडिया को डिफरेंट जोन में बांटा हुआ है. जो सबसे डेंजरस पॉइंट है वो आपको इसी हिमालयन बेल्ट के चारों तरफ दिखाई देगा. भुज, हिमालय मींस नॉर्थ इंडिया, हिमालयन स्टेट्स, देन नॉर्थ ईस्ट. यहां बहुत खतरा है, बट द साउदर्न पोर्शन, साउदर्न पेनिनसुला, डेक्कन ट्रैप, इट इज स्टेबल. इट मींस जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो, उसकी बहुत लेस चांस है कि वहां पे कोई अर्थक्वेक ऐसा आ रहा, बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेस. ठीक है, कॉजेस में आ गए हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेस, वन इज नेचर, अनदर इज ड्यू टू मैन. तो इंसान ऐसा है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है. ठीक है, जो सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है उसको भी उड़ा सकता है. ठीक, तो महाराष्ट्र में नेचुरल नहीं आएंगे तो कोयना डैम रिजर्व, तो कोयना डैम से वहां पे ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आ गया. तो दैट इज मैन मेड. नाउ फर्स्ट नेचुरल कॉजेस, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हुए चलो. इन नेचुरल कॉजेस सबसे पहले आप देखो क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन. ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक होगा. वॉल्केनिक इरप्शन, when volcanoes are erupt, at that time earthquake would be there. ठीक है, इसके अलावा due to tensional and compressional force means folding and faulting. Folding and faulting, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ट्रैम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, और थोड़ा सा भी ट्रैम्बलिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक. There are some places which move in radial direction, means upward and downward. So upward and downward movement, because of plate movement, it means plate tectonics. प्लेट टेक्टोनिक्स, जिस चेयर पे आप बैठे हो उसी को अगर
थोड़ा सा हिला दिया जाए, देन देयर आर सम ट्रेम्बल्स जो आपकी बॉडी में फ्लो करेंगे. इट मींस प्लेट टेक्टोनिक्स is also responsible for the earthquake. In mountainous region लैंडस्लाइड बहुत हैवी लैंडस्लाइड आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, देन ऑल्सो इतना बड़े बड़े बाउल्डर्स नीचे आएंगे तो उसका क्या होगा, वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलेंगे. सो लैंडस्लाइड, सर फिर इससे इरोजन भी तो होगी ना? क्या चीज, सर इरोजन भी तो होगी इससे। एरोजन होगा, वो एक अलग चीज हो गया. We are right now we are talking just about earthquakes. It means trembling of earth surface. अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, बस हमको अभी वो देखना है, बाकी सब चीज छोड़ दो. Sir, यस sir, isn't landslide a man-made cause? So यस because due to deforestation, landslide occurs. यस, So then how come it comes in natural cause? नेचुरल भी तो होता है. So पर ज्यादातर तो man-made ही होता है ना सर. मैन मेड अब होने लगा है, बट हम ये नहीं कह सकते कि लैंडस्लाइड ओनली और मोर चांसेस जो है वो बिकॉज ऑफ ह्यूमंस है. नेचुरल कॉजेस भी है, ठीक है. ग्लेशियर में भी लैंडस्लाइड हो रहा है, ग्लेशियर्स ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत कुछ ये भी होता है. So there may be a vice versa case like this landslide also happened due to earthquake. Natural Yes. causes happening due to- दोनों एक के पीछे एक है. पुलिस चोर के पीछे है या चोर पुलिस के पीछे? वो सलमान खान की कौन सी मूवी थी? हाँ, किक. तो क्या डायलॉग था उसका, कि डेविल किसी के पीछे है यार. हाँ, डेविल आपके पीछे है, आप डेविल के पीछे. ऐसे ही लैंडस्लाइड अर्थक्वेक के पीछे है, अर्थक्वेक इसके पीछे. सो दीज आर नेचुरल कॉजेज. नाउ मैन मेड कॉजेज. इन झारखंड एरिया, वहां क्या हो रहा है, कोल माइनिंग. तो कोल माइनिंग हो रही है, और माइनिंग करने के लिए कई बार डायनामाइट एक्सप्लोजन भी यूज किए जाते हैं. तो कई बार क्या होगा कि वो पूरी जगह पर वाइब्रेशंस जनरेट होंगे. तो इट इज बिकॉज ऑफ द मैन मेड. सो फर्स्ट पॉइंट, मैन मेड कॉजेज, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग. डीप अंडरग्राउंड माइनिंग. सेकेंड, blasting of rocks, blasting of rocks by dynamite for construction purposes. Then in उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में क्या हुआ, उत्तरकाशी उत्तराखंड, वहां पे कुछ नीचे टनल वगैरह कुछ बन रही थी, ठीक है. अंडरग्राउंड टनल बनने के कारण उत्तरकाशी में जितने भी आप देखोगे पुरानी न्यूज, तो जितने भी वहां घर हैं उनमें के दीवालों में, रूफ में क्रैक्स डेवलप हो गए. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स. और वो अर्थक्वेक क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन वर्क. ओके, सो थर्ड पॉइंट, डीप अंडरग्राउंड टनल, डीप अंडरग्राउंड टनल. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. जैसे वो नॉर्थ कोरिया का पागल बच्चा, उसने किया था जब एट द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, तो चाइना और जापान, साउथ कोरिया, वहां तक वो ट्रेमर्स पहुंचे थे बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्वायर इंड्यूस्ड, रिजर्वायर इंड्यूस्ड
seismicity, SEISMICITY, reservoir induced seismicity, डैश लगा के उसके आगे लिख लो कोयना, कोयना रिजर्वायर, कोयना रिजर्वायर witnessed earthquake, witnessed earthquake in 1967, in 1967. Okay, so these are the causes of earthquakes. अब इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या हो सकता है? What is earthquake? What are the causes of earthquakes? Okay. And what are the effects of the earthquake? कुछ इस तरीके से वो डायमेंशन क्रिएट कर सकता है. देखो क्वेश्चन को डायमेंशन इसी तरीके से देखना है. फॉर एग्जाम्पल earthquake. What is it? What are the causes? What are the effects? How we measure it? ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ आ सकता है क्या? जब आप लोग थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन बेहतर लेवल पे पहुंचेगी, एट दैट टाइम आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कुछ ऐसे फ्लो चार्ट में ब्रेक कर लोगे और वहां से आपको पता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला. अर्थक्वेक मींस दिस इज द की. क्लियर? मैं आपको वो की दे रहा हूं जिससे क्वेश्चन कहां से जनरेट होते हैं. एग्जामिनर के पास जो की है ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. आपको आंसर भी मिल चुका है, की भी मिल चुकी है, मींस वो इसी की का यूज करके नए क्वेश्चंस को जनरेट करेगा. ठीक है. इन सडन मूवमेंट, अनदर सडन मूवमेंट इज वॉल्केनो. इट मे बी कि वो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक को भी एक साथ मर्ज कर दे, है ना? क्योंकि कॉजेज में, नेचुरल कॉजेज में फर्स्ट कॉज ही क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन. सो अर्थक्वेक कंप्लीट हुआ. सेकेंड इज volcanism. Volcanism. So this is volcano. Volcano is a noun and volcanism is a process. Okay. When we talk about volcanism, it means the eruption of molten magma which is coming from magma chamber, that is mental portion. Then this process is called volcanism. When we talk about volcano, then it is a vent from where this molten magma is coming out, that is called volcano. Clear? So volcano, volcanism में difference है. So these volcano means this is lava. Lava से क्या बनेगा? There are various layers and there would be some conical shape. This is called mountain. So it would be some mountain like mountain Stromboli, Mount Stromboli, Mount Cotopaxi, Mount Kilimanjaro, okay, Mount Fuji, and this is ash clouds, जो ash cloud generate हो रहा है. So this is about volcanism. अगर इसको थोड़ा मैप में देखें, this is volcano, this is magma chamber. This magma is coming in upward direction. This is a vent. अच्छा, the mouth of the vent is called crater. This magma may be low viscous or high viscous. High viscous means just like Fevicol type.
लो विस्कस मींस जस्ट लाइक वाटर। अगर एक तरफ फेविकॉल आप ड्रॉप करो तो देयर वुड बी सम कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। ओके, वहीं वाटर है देन इट विल फ्लो, चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसका यूज होगा विस्कोसिटी का। तो यह यहां पर आ रहा है इफ मैग्मा इज लेस विस्कस it means just like favicol and the force is coming out so vastly, then it will explode this place and the crater जो अभी छोटा था it would be huge size and that huge crater is called caldera। ठीक है, अभी दिखाएंगे इसको। so this is crater and this is ash cloud और इसके साथ साथ कुछ क्या होंगे वॉल्केनिक मैग्मा भी ऊपर निकलेगा बिकॉज द मैग्मा विल कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, तो वो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ बोल्डर्स टाइप के भी दूर दूर स्प्रेड होंगे। दीज बोल्डर्स आर कॉल्ड वॉल्केनिक बॉम्ब्स। ओके, छोटा सा ड्रॉपलेट्स होंगी, लैपली वगैरह कुछ उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, so this is cone made of lava, this is ash layer deposited here, this is ash clouds, okay, this is crater। ऐसा देखना है तो इसमें देखो, this is magma chamber, this is vent, this is crater, this is ash cloud। clear? volcanic bombs means यहां पर ये जो छोटे छोटे बोल्डर्स गिर रहे हैं ना, सिंपल पाइप लो और पाइप से थोड़ा सा गार्डनिंग में पानी थोड़ा सा स्प्रेड करो, कुछ ड्रॉप्स पानी के इधर उधर जाएंगे, वो ड्रॉप्स मान लो इट इज लाइक लव, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर बहुत तेजी से वो ठंडा हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इन सॉलिड स्टेट। वो जो बॉल्डर्स हैं वही क्या हो जाएगा, हमारा बॉम्ब्स, वॉल्केनिक बॉम्ब्स। क्लियर? लिखो इसमें volcanism, volcanism is the eruption of, volcanism is the eruption of molten rock or magma, molten magma or rock from inside the earth, from inside the earth to the surface। Next point, volcano, first point was volcanism, second is volcanoes। Volcanoes are a vent in the crust, are vent in the crust of earth through which molten material erupts suddenly toward the earth surface, toward the earth surface। Next point, volcanism occurs because of earth internal heat, because of earth internal heat and is associated with tectonic processes, and a part of rock cycle, and a part of rock cycle।
नेक्स्ट पॉइंट नोट लिखना, लावा। लावा, when magma comes out from the vent, it becomes lava or it is called lava. There are two types of lava. One is acidic lava and another is basic lava. Acidic lava and basic lava. एक टेबल बना लेना। In acidic lava, there is high silica content. In basic lava, there would be very low or low silica content. It has high melting point. Low melting point. It is highly viscous. Is low viscous. Its eruption is explosive in nature. Its eruption is quite it build steep conical structure while basic lava is spread over vast area. Okay, so acidic lava contain सिलिका एलिमेंट और सिलिका कंटेंट इसमें ज्यादा होगा, नियर अबाउट 70-80%। इन बेसिक लावा इट विल कंटेन 20% और 30%। जितना ज्यादा सिलिका कंटेंट उतना ही ज्यादा ये एसिडिक। इट इज नॉट फिक्स्ड कि किसी में 70% होगा, किसी में 80% होगा। इट मे बी इन सम टाइप ऑफ लावा देयर आर 90% और मोर देन 90% सिलिका कंटेंट इज प्रेजेंट। It may be less than 10% silica is present. It means जितना ज्यादा सिलिका कंटेंट होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी ज्यादा होगी, है ना, एंड जितना कम है उतनी बेसिसिटी ज्यादा है। जितना एसिडिक है उतना ही वो हाईली विस्कस है, उतना ही ज्यादा वो गाढ़ा है, जस्ट लाइक
चाशनी और फेविकॉल, जितना बेसिक है उतना ही बिल्कुल लिक्विड है, जस्ट लाइक वाटर। ठीक है, दैट इज व्हाई इट बिल्ड स्टीप कॉनिकल स्ट्रक्चर। माउंटेन्स यहां पर बिल्ड होंगे बिकॉज ऑफ एसिडिक लावा, बिकॉज ऑफ बेसिक लावा डेक्कन ट्रैप बनेगा, शील्ड वॉल्केनो बनेगा, क्योंकि वहां वाटर स्प्रेड हो रहा है, मींस वॉल्केनिक लावा स्प्रेड हो रहा है ओनली। क्लियर? ओके, सर यस सर बेसिक और बसाल्ट सेम ही है? यस। बेसाल्ट लावा क्या है? इट इज बेसिक लावा। बेसाल्ट इज अ basic lava form, while acidic lava granite। ठीक है, now types of volcanoes, types of volcanoes। There are two bases. First is types of eruption and second is on the basis of frequency. Then there are two bases. Types of eruption and basis of frequency of eruption. First, on the basis of frequency of eruption, कितना फ्रीक्वेंसी से eruption हो रहा है? There are three types: first, second and third. First is active volcano, second is dormant volcano, and the third is inactive volcano. Inactive volcano or extinct, inactive or extinct volcano. Now first heading is active volcano. Active volcano means these are active. It means these are erupting frequently. Even right now, these volcanoes are erupting. For example, Mount Stromboli. ठीक है, तो इसमें लिखिए they erupt frequently, they erupt frequently and mostly located around and mostly located around ring of fire. For example, Mount Stromboli. Mount Stromboli is an active volcano, is an active volcano, and it produces so much of gas clouds, so much of gas clouds that it is called lighthouse of Mediterranean. It is called lighthouse of Mediterranean.
लाइट हाउस मीन्स प्रोड्यूसेस लाइट। कोस्ट पे कुछ टावर्स बनाई जाती हैं सो दैट उससे जो ओशन साइड होता है वहां पे लाइट्स को डाला जाता है सो दैट शिप्स को ये समझ में आ जाए कि हाँ इधर साइड में जाएंगे तो कोस्ट मिल जाएगा। तो लाइट हाउस यहां पर आप देखिए, दिस इज एक्टिव वॉल्केनो, दिस इज डोरमेंट वॉल्केनो, दिस इज एक्सटिंक्ट और इनएक्टिव। एक्सटिंक्ट मींस डेड हो चुका है, खत्म हो गया मैग्मा चैम्बर। ये इट मे बी कि ये इन फ्यूचर कभी इरप्ट हो जाए। एक्टिव इज एक्टिव। तो माउंट स्ट्रोम्बोली कहां लोकेटेड है? दिस इज इटली। मोदी जी गए हैं ना मेलोनी जी से मिलने, तो यहीं पे यहां पे देखो, दिस इज स्ट्रोम्बोली, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। सो स्ट्रोम्बोली, दिस इज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। देखो, दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड इट इज कोलाइडिंग विथ यूरेशियन प्लेट। तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, दिस अफ्रीकन प्लेट इज सबडक्टिंग हियर एंड देन इट विल मेल्ट, कन्वर्ट इनटू हॉट मेंटल प्लूम, और उससे यहां पर क्या हो रहा है, माउंट स्ट्रोम्बोली यहां पर दिखाई दे रहा है। यस, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज माउंट स्ट्रोम्बोली। कंटिन्यूअसली एरप्शन वहां पर हो रहा है। इन नाइट ये दूर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जो शिप्स जा रहे हैं इस मेडिटेरेनियन सी से, उनको दूर से दिखाई दे जाता है दैट देयर इज अ लाइट हाउस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ओके, ठीक है। माउंट स्ट्रोम्बोली। सेकेंड हेडिंग, डोरमेंट। डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो, इसमें लिखिए, दीज आर नॉट एक्सटिंक्ट, these are not extinct but have not erupted, but have not erupted in recent history. In recent history, the dormant volcanoes may erupt in future. The dormant volcanoes may erupt in future. For example, Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro, Kilimanjaro, located in Tanzania. Mount Kilimanjaro, located in Tanzania, is a dormant mountain, dormant volcano. तो इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, केन्या एंड तंजानिया के बॉर्डर पे मिलेगा किलिमंजारो, ठीक है। रजनीकांत एंड ऐश्वर्या राय की जो मूवी आई थी रोबोट वाली, उसमें भी एक गाना था कि किलिमंजारो किलिमंजारो लड़की पर्वत की यारो, ठीक है, ये उसके लिरिक्स थे। तो किलिमंजारो, this is a dormant volcano. It means in future it may erupt. ये this is snow. देखो, Everest mountain height is 8848 meter and this is Kilimanjaro 5892 meter, ठीक है। तो लगभग 6 किलोमीटर हाइट मान लो, ठीक है। एट 6 किलोमीटर हाइट क्लाइमेटोलॉजी पहुंचना, फिर मुझे बताना कितना टेम्परेचर होगा। इट इज इन माइनस,
That is why there are ice, snow. Okay, so this is a dormant volcano. Third type is inactive or extinct volcano. Inactive or extinct volcano. टेम्परेचर लैप्स रेट होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इन ट्रोपोस्फियर। आगे पढ़ेंगे। इट मींस 1 किलोमीटर हाइट ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। देन एट द हाइट ऑफ 6 किलोमीटर 6.5 इंटू 6 कितना हुआ 36, मान लो 6 पकड़ के चलो, ठीक है। 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस कर दो, कितना हो गया? इट इज नियर अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 एंड -1, इसीलिए यहां पे आपको दिख जाएगा। सो इनएक्टिव volcano, these volcanoes have not erupted in distant geological past, have not erupted in distant geological past. In most cases, the crater of the volcano is filled with water, making it a lake, so it becomes a crater lake. ठीक है, सब कुछ बंद तो हो ही चुका है। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया, Deccan Trap of India is an example of inactive or extinct volcano. It means in future वहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं। थोड़ा सा ना अब इंडियन प्लेट के नीचे जाओ। दिस इज मेन डेक्कन ट्रैप, ओके, मींस कुछ यहां पर है। एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन कहां मिलती है? बिटवीन अपर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट। सो अपर क्रस्ट में यहां पे क्या है? दिस इज डेक्कन ट्रैप, और इसके ऊपर हम लोग कहीं रह रहे हैं। और नीचे से क्या है? दिस इज हॉट मेंटल प्लूम। बट हियर यहां पर क्या हुआ, जो ये डेक्कन ट्रैप है ये बहुत सॉलिड हो चुका है, इतना मोटा कवर नीचे लग चुका है कि ये जो एरप्शन हो रहा है, मैग्मेटिक एरप्शन, ये देखो, और हॉट मेंटल प्लूम विच इज राइजिंग प्लूम, वो यहाँ पे आके इसको डाइवर्स हो जाता है, इधर की ओर डाइवर्स हो जाता है, कुछ इधर चला जा रहा है, लेकिन ये इसको हिला नहीं पा रहा है बिकॉज इट्स थिकनेस इज टू मच, बहुत ज्यादा थिकनेस हो चुकी है। ठीक है, दिस इज कच्छ रिफ्ट, मींस दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट एंड दिस इज द ईस्टर्न साइड। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। सो डेक्कन ट्रैप इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनएक्टिव वोल्केनो। सो दिस इज द फर्स्ट types of volcano on the basis of frequency of eruption. Now types of volcanoes on the basis of eruption. Okay, so next. Sir? Yes, So what is the time frame to decide whether the volcano is dormant or inactive? Like how many years? normally geological past is used to check. For example, for Deccan Trap, यहां पर eruption कब हुआ था लास्ट? when Indian plate was moving in northeast direction from Gondwana land and it was passing over Reunion Island, Reunion hotspot. Reunion hotspot मैंने आपको बताया था। वर्ल्ड मैप एक बार ओपन कर,
This is Indian Ocean, and here this is Reunion. This is Madagascar. This is Reunion. Means when Indian plate was passing from here, at that time volcanic eruption was happening at this southern peninsula or at this Indian plate. और उसके बाद जब ये आगे बढ़ गई, it means lakhs of years have been passed. तो जियोलॉजिकल पास्ट को चेक किया गया तो ये दिखा कि बहुत सारे ईयर्स हो चुके हैं, लैक्स और करोड़ ऑफ ईयर्स. इट मींस आगे पॉसिबिलिटी नहीं है. डॉर्मेंट के पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो, लास्ट 200 ईयर्स और 300 ईयर्स में कभी एक्सप्लोजन हुआ था लास्ट, और उसके बाद से अब तक नहीं हुआ है, देन इट इज डॉर्मेंट. एक्टिव तो कंटिन्यूअस है ही. नाउ क्लियर? Yes, sir. On the basis of eruption. First type, it is hydrothermal eruption. Hydrothermal eruption. लिखो इसमें एक लाइन. These eruptions include ash and not magma. They are driven by the heat caused in hydrothermal system. Hydrothermal system. It means वॉल्केनिक इरप्शन में सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ ऐश ही निकली है, मॉल्टन मैग्मा लावा वगैरह कुछ नहीं निकला. दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथर्मल इरप्शन. सेकेंड टाइप इज फ्रियाटिक इरप्शन. और एक और टाइप होता है दैट इज कॉल्ड फ्रियाटो मैग्मेटिक eruption. Phreatic eruption and phreatomagmatic eruption. थोड़ा इसमें बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है, देखते हैं क्या है. This is magma chamber. Now in this type means this is phreatic eruption. This is phreatic eruption. What is happening? The hot magma plume is going upward, but there is a slab of rock जो इसको यहां से stop कर देता है. But due to heat,
ये जो रॉक है इट इज एब्जॉर्बिंग दैट हीट, और इसके जस्ट अबव क्या है, कोई वाटर बॉडी है, इट मे बी एनी लेक, रिवर और एनी अंडरग्राउंड वाटर स्टोर। तो क्या होगा, व्हेन दिस रॉक विल बी हीटेड, जस्ट लाइक पैन, चाय बनाने के लिए हमने उस पर रखा हुआ है पानी, क्या हो रहा है, आग लग रही है नीचे, ठीक है, बर्नर नीचे है और उसमें जो फायर नीचे लगी हुई है वो पैन को गर्म कर रहा है, और पैन जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, वाटर में। देन वाटर विल बी बॉइल्ड, और जब ये बॉयल होगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, और इसके ऊपर यहां पर क्या है, देयर आर सेवरल रॉक्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर कुकर टाइप की कंडीशन होगी, ठीक है। एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ pressure of steam these rocks will be exploded, और फिर यहां से eruption होगा, steam plus ash, then it will be phreatic eruption, ठीक है। phreatic eruption में ये So which rocks are exploding, this one or upper one, why this rock is not exploding? प्रेशर कुकर जब भी फटता है कहां से फटेगा, बॉटम से या ऊपर से, Why is it not? this one, this is a plutonic rock जिसको thousands of years लगा है, it means this is solid like granite, ठीक है। तो आजकल तो ग्रेनाइट का भी पेन आने लगा, सॉलिड है वो, नहीं उसमें उसको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगने वाला। मींस दीज आर एसिडिक मैग्मा विच विल बी कूल डाउन एट मेड प्लूटोनिक और इंट्रूसिव रॉक्स, और ये यहाँ पर सॉलिड है, इसका क्रिस्टल भी बहुत बड़ा साइज का है, कोर्स स्ट्रक्चर है, कोर्स ग्रेन है, और इट विल एब्जॉर्ब द हीट विच इज कमिंग फ्रॉम द मेंटल, और उससे क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट इन द underground water source, it will be boiling and then it will convert into steam, and that steam makes some pressure, और वो pressure blast हो जाएगा, ठीक है। और वो blast होने के बाद जो blast हो रहा है that is called phreatic eruption. In phreatomagmatic eruption थोड़ा सा difference है, phreatomagmatic eruption this is magma chamber, this is water body, this is magma, hot magma, cold, अभी बताते हैं। Phreatomagmatic eruption, in this type of eruption hot magma directly comes in contact with the water, while in phreatic eruption डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा था मैग्मा का वाटर के साथ, यहां डायरेक्ट कांटेक्ट है। इट मींस व्हेन हॉट मैग्मा डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, देन देयर वुड बी chemical reactions and cooling of magma,
गैसेस बनेगी, स्टीम बनेगी, ठीक है, और उससे जो एक्सप्लोजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रेटोमैग्मेटिक। ओके, माउंटेन है माउंट क्राकाताओ, और क्राकाताओ वॉल्केनो कहां लोकेटेड है दिखाते हैं। दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज जकार्ता, दिस इज क्राकातो। क्राकातोआ एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ phreatomagmatic eruption, because when magma is erupting then it is directly contacting with the ocean water, और इस तरीके से क्या है जो क्राकातोआ या क्राकातोआ बोलते हैं, वो जो हमारा वॉल्केनो था, नाउ इट इज सबमर्ज्ड अंडर द सी। एक दूसरा आज के टाइम में बन गया, दैट इज कॉल्ड अनक क्राकातोआ। ठीक है, तो ये याद रखना, क्राकातोआ टोटली डूब चुका है, बट राइट नाउ आज के टाइम में क्या है, यहां पर अनक क्राकातोआ बना हुआ है। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रेटोमैग्मेटिक and it is an active volcano, and recently in 2020 जापान में एक आइलैंड है, ओगासवारा आइलैंड और बोनिन आइलैंड, it is also formed due to phreatomagmatic eruption। तो phreatic eruption and phreatomagmatic eruption दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर हो गया? ओके okay. तो देखिए, this is phreatic eruption, this is hot magma, here it is water body, and this is slab of rock or plutonic rock. Then due to conduction method heat will be transferred from here to here, and then steam formation होगा, और उससे यहाँ पर क्या हो रहा है, phreatic eruption हो रहा है। While in phreatomagmatic eruption, देखिए लावा डायरेक्टली किसमें पहुंच गया, ग्राउंड वाटर, then there would be phreatomagmatic eruption। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो phreatic eruption। In this kind of eruption, in this kind of eruption, the explosive activity is driven solely by the interaction of magma with pre-existing groundwater or surface water। Next point, unlike phreatomagmatic eruption, comma, there is no direct mixing of magma, and water। Instead, the heat from magma causes the water to flash to steam, So please repeat once. Instead, the heat from the magma causes the water
to flash to steam explosively. Next point. These eruptions are generally less explosive and produce smaller ash clouds compared to phreatomagmatic eruption. Next point. Phreatic eruptions often result in the ejection of fine particles of ash and rock fragments creating ash plumes and forming crater like depression known as Mars. It means this crater is called Mars. The crater formed by phreatic eruption is called Mars, MARS. Okay, so Mars, crater, caldera है सारे डिप्रेशन, लेकिन तीनों का फॉर्म अलग है, कॉज अलग है. Okay, so this is about phreatic eruption. Next, phreatomagmatic eruption. In this kind of eruption, So could you please show the diagram for a phreatomagmatic eruption? So this the is one you had drawn. okay. This is phreatomagmatic. देखो इसमें, in this kind of eruption, magma comes into contact with groundwater or surface water. Next point, when magma heats the water rapidly, comma, it flashes to steam, comma, causing a highly explosive eruption.
causing a highly explosive eruption. Next point, the explosive nature of phreatomagmatic eruption is due to the rapid expansion of steam and the fragmentation of magma into fine ash and rock fragments These eruptions often produce thick layers of volcanic ash and tough TUFF ब्रैकेट में लिखिए and tough in bracket rocks made of volcanic ash are called tough bracket close around the vent. For example, in phreatomagmatic Krakatoa volcano. This is phreatomagmatic. देखिए, this is Indonesia. Here it is Anak Krakatoa, which is new. This is Anak Krakatoa. एक इसकी वीडियो यहाँ पर ली थी. देखिए. This is ash cloud. This is lava making many layers depositing on this cone. Okay, so this is phreatic or phreatomagmatic eruption. In 2019, this question was asked. Till now, phreatic अभी तक पूछा जा चुका है. Phreatomagmatic आज तक नहीं आया है. When UPSC asked about phreatic, definitely in future it may ask about phreatomagmatic. So question was, लिखो question, describe phreatic eruption and their consequences. 2019 में ये पूछा था. Consequences means effect. ठीक है, वो हम लोग लास्ट में जितने भी वॉल्केनोज के इफेक्ट होंगे वो सारा कुछ कोई भी पूछे किसी भी टाइप का पूछे उसका कंसिक्वेंस वो मिल जाएगा. अच्छा दो volcanoes आ रहे हैं ऊपर वो नदी के ऊपर नदी के माउथ के ऊपर गिर जाता है उसका लावा. हाँ, वो कहाँ बताते हैं.
First was hydrothermal, then phreatic, third phreatomagmatic, fourth one is strombolian, and Hawaiian volcano. Strombolian and Hawaiian volcano or eruption. तो लिखो Hawaiian eruption. Hawaiian eruption has fire fountains. Has fire fountains. While the Strombolian eruption, has explosion due to lava fragments. Sir, repeat. While the Strombolian eruption has explosion due to lava fragments. Basically, this kind of eruption means Hawaiian or Stromboli. इसमें जो बात हो रही है, it is on the basis of acidic and basic lava. In Hawaiian volcano or in Hawaiian eruption, there is more basic lava which are erupting there. That is why it is just like fire fountain. एक फाउंटेन चल रहा है और वो चारों तरफ स्प्रेड हो रहा है. That is fire fountain. But here at Stromboli, Mount Stromboli means lighthouse of Mediterranean Sea. Its lava is in between acidic and basic. It means थोड़ा सा तो in comparison to this Hawaiian, थोड़ा सा इसका viscosity ज्यादा होगा, है ना? That is why it will like explosion. Eruption with explosion यहाँ पर हो रहा है. While at Hawaiian there is only eruption. It is quiet in nature. Why? क्योंकि वहां बेसिक लावा ज्यादा है, यहां बेसिक थोड़ा सा कम है, एसिडिक नेचर ज्यादा है. इतना डिफरेंस है. फिफ्थ इज Volcanian eruption. Volcanian eruption. Sir? Yes. Sir, these are under the same heading on the base of eruption, right? Yes. Okay, sir. Volcanian eruption में लिखो, these eruptions last for a short period of time and can reach up to a height of 20 kilometers. Reach up to a height of 20 kilometers. So these are various kind of eruptions. This is Volcanian eruption. Okay, तो देखो यहाँ पे क्या है. This is Hawaiian eruption because it is more fluid in nature. That is why क्या बन रहा है यहाँ पे, shield platform बन रहा है because it is spreading. This is a Strombolian eruption. यहाँ थोड़ा सा लावा कैसा है, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है in comparison to this Hawaiian. That is why explosion भी हो रहा है. While this is Volcanian, इससे intense है. इसका ash cloud up to height of 20 kilometer it reaches. तो यहाँ ये Volcanian हो गया. More intense form is Plinian, and Plinian eruption is the most explosive eruption.
क्यों? बिकॉज एसिडिक लावा इज इमर्जिंग देयर और एरप्टिंग देयर, और यहां से जितना ज्यादा एक्सप्लोजन होगा उतनी तेजी से ये बहुत ज्यादा हाइट कवर करेगा, अप टू द हाइट ऑफ 35 किलोमीटर, 20 to 35 किलोमीटर का एश क्लाउड यहां डेवलप हो जाता है अराउंड दिस प्लीनियन eruption, while volcanic eruption only maximum up to 20 kilometer. This is the thickness of ash cloud of volcanic eruption. Okay, so the last types of volcanic eruption or volcanoes is plenian and subplenian eruption. Subplenian, इसमें लिखना subplenian eruptions reach up to 20 kilometer height, 22 eruption. क्लाउड भी मींस वो पूरा हाइट उसी का है, eruption मींस लावा भी हो रहा है, एश क्लाउड भी हो रहा है, 20 किलोमीटर हाइट, while plenian eruption reach up to 20 to 35 kilometer height, reach up to the 20 to 35 kilometer height. Okay, so these are the types of volcanoes on the basis of frequency and on the basis of eruption. Now, landforms. One more was there something. I diagram level. Icelandic, it is more flood in comparison to Hawaiian. It means ये थोड़ा सा ज्यादा इसका विस्कोसिटी होगा, लेकिन आइसलैंडिक eruption और भी ज्यादा लिक्विड है, दैट इज वाई यहाँ बिल्कुल फ्लैट आपको प्लेन दिखाई दे रहा है. दिस इज आइसलैंडिक, दिस इज प्लीनियन, कुछ इस तरीके से. नाउ volcanic landforms. There are two types of volcanic landforms. First is extrusive landform. Another is intrusive landforms. Intrusive means inside the crust and extrusive means above the crust जो landform develop हो रहा है. In extrusive landform, first one is shield volcano. Shield volcanoes. First heading, shield volcanoes. लिखो इसमें. They are not very steep. They are not very steep, but are far and wider. They are not very steep, but are far and wider. They extend to great height. They extend to great height
as well as distance. Next point. They are the largest of all volcanoes. They are the largest of all volcanoes. In the world. As the lava flows to a as the lava flows to a far distance, for example, Hawaiian volcanoes. Next point. Shield volcanoes have low slopes. Shield volcanoes have low slopes and consist almost entirely of frozen lava. Entirely of frozen lava. Next point, these volcanoes are made up of basalt. These volcanoes are made up of basalt, in bracket less viscous, comma, bracket close, comma, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. These volcanoes are not steep. This is a shield volcano. Magma chamber. देखो इसका स्लोप ज्यादा तो है नहीं. Shield volcano. This is called shield volcano. This is a vent. From there, lava is continuously erupting. And this is the fire fountain in Hawaii Island. Hawaiian Island कहाँ पे है? देखो. In this Pacific Ocean. This is Hawaii. अमेरिका के लोग यहीं पे घूमने के लिए जाते हैं. उनका ये अंडमान निकोबार है. जैसे अपना अंडमान निकोबार क्या है? हमारा इंडिया का हवाईयन आइलैंड. अब वो लाइव लगा रखा है लोगों ने अपना. थोड़ा सा देखो उसके बाद समझ में आ जाएगा. क्लियर? So this is shield volcano. Second is
सिंडर कोन वॉल्केनो, सिंडर कोन वॉल्केनो, सिंडर कोन वॉल्केनो। तो इसमें cinders are also known as scoria, SCORIA. It is also known as scoria. It's modern name of cinder. These are small volcanoes. These are small volcanoes. These volcanoes consist almost entirely of loose grainy cinders, and almost no lava, Next point, they have very steep sides. They have very steep sides. They have very steep sides and usually have a small crater on top. Draw this diagram. This is cinder cone, mainly made of ash, which are producing from this volcano. बहुत छोटा सा साइज रहेगा माउंटेन का, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या है, लूज पार्टिकल्स ऑफ एश वो यहाँ पर डेवलप हो रखे हैं. एंड दिस इज crater. So draw this diagram. Crater and vent. Suppose this is the plate और this was the uppermost layer जहां कभी हम लोग खड़े हुए, ठीक है. And this is the place from where magma is erupting. Magma is about to start the eruption. This vent is called volcano. ठीक है. After some time there would be deposition of very many layers of lava. Then it will convert into conical structure. ठीक है. तो जो uppermost mouth है, the mouth of volcano is called crater. ज्यादा बड़ा माउथ हो गया then caldera. Due to phreatic eruption then it is called mar. MAARS, Mars. ठीक है. तो volcano means this vent जहां से ये पास हो रहा है. हाँ, this is vent. हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है. इतना ड्रॉ कर लिया, अभी देखो. वेंट बेसिकली इस पाइप को दिखा रहा है, द पाइप और वे. दिस इज मेन वेंट, दिस इज सेकेंडरी वेंट. एक और ये भी क्या दिखा रहा है, इस पाथ को दिखा रहा है. ये जो पाइप है ना, ये इसी को दिखा रहा है. बस वो पाइप ही है. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड वॉल्केनो. तो आज के लिए इतना रखते हैं. रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट वीक